हम लोग जो एनसीईआरटी का दिया गया है टैक्सोनॉमिकल एड्स, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, बट लिटिल बिट अबव द एनसीईआरटी लेवल। तो एनसीईआरटी को भी तो हम लोग को कवर करना ही है, इसके साथ साथ हम लोग भी थोड़ा नीट लेवल में भी हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे। सो चलो शुरू करते हैं हम लोग इसके बारे में। और पिछले वाला वीडियो मिस कर गया है तो जरूर देख लेना, और मेक श्योर दैट प्लीज वॉच द एंटायर वीडियो, डोंट स्किप इट। स्किप करोगे तो कैसे समझ में आएगा, करेक्ट? एक 14 मिनट का 15 मिनट का वीडियो होता है, तुम लोग उसको स्किप करके देखोगे तो कैसे कंप्लीट नॉलेज मिलेगा? तो कंप्लीट नॉलेज के लिए पूरा वीडियो जरूर देखो, तभी समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा छोटा छोटा ट्रिक्स होता है, छोटा छोटा इंफॉर्मेशन होता है जो नीट के लिए बहुत काम में आता है। सो विदाउट स्किपिंग जस्ट वॉच द एंटायर वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। एंड पूरा वीडियो देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कोई क्वेश्चन है तो पूछो, करेक्ट? बट पूरा वीडियो जरूर देखो, क्योंकि जब नॉलेज मिल रहा है फ्री में, क्योंकि ये फ्री चैनल है, इसके लिए तुमको तो कोई पे नहीं करना पड़ रहा है, तो जब फ्री चैनल है तो पूरा देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब इंफॉर्मेशन का मिलेगा अच्छा सा। सो चलो हम लोग शुरू करते हैं। सो इफ यू कम टू द हर्बेरियम, व्हाट इज एक्चुअली द हर्बेरियम? दिस हर्बेरियम you can call, this is a dry garden. It's a dry garden of the collected plant specimen. Okay, it's a dry garden, so it's not a live garden, it's a dry garden. So why I call this one as a dry garden? Because over here हम लोग बचपन में वो क्या करते थे, सब सोचो कुछ पत्ता हम लोग को पेड़ का पत्ता अच्छा लगा तो उसको तोड़ लिए और बुक के अंदर में हम लोग रख लिए, और देखते हैं 1-2 हफ्ता के बाद आराम से वो जो लीफ है उसका कलर भी चेंज हो जाता है, लीफ थोड़ा शेप में आ जाता है, ड्राई हो जाता है, तो हम लोग बचपन में खिलते रहते थे। तो नोइंगली और अननोइंगली उस टाइम में हम लोग हर्बेरियम ही तैयार किए हैं, करेक्ट? समझ रहे हो कि नहीं? सो सेम चीज इसको जब हम लोग थोड़ा साइंटिफिक एस्पेक्ट में करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? हर्बेरियम। बस इजी तो है, कहां पे कितना डिफिकल्टीज है? कुछ डिफिकल्टीज नहीं है। सो यहाँ पे हम लोग क्या बोले पहले? द हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस। व्हाट इज द हर्बेरियम? हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस, okay, or respiratory or the dry garden of the collected plant specimen. So यहाँ पे हम लोग का क्या है, सारा प्लांट स्पेसिमेन जो है हम लोग उसको कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद हम लोग उसको क्या करते हैं? कलेक्ट करने के बाद हम लोग उसको सबसे पहले करते हैं ड्राई। कलेक्शन के बाद हम लोग उसको क्या करते हैं? ड्राई करते हैं, करेक्ट? सो ड्राई के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ले लेंगे पेपर, ले लेंगे पेपर के अंदर में सपोज सोचो कोई प्लांट स्पेसिमेन है, उसको हम लोग वहां पे पुट कर देंगे, पुट करके फिर उसके ऊपर हम लोग पेपर दे देंगे, और ऊपर से हम लोग इसको कार्डबोर्ड दे देंगे, और देके इसको हम लोग बढ़िया से टाइट से इसको हम लोग बांध देंगे। बस हो गया ड्राइंग, करेक्ट? सो यहाँ पे क्या है, हम लोग को एक करना है। बट यहाँ पे हर्बेरियम जो है, हर्बेरियम एक्चुअली इसका साइज क्या होता है? इसका जो स्टैंडर्ड साइज होता है, हर्बेरियम शीट मार्केट में भी अवेलेबल है, that standard size is 11.5 to into 16.5. That 11.5 inches in breadth. In breadth, it will be 11.5 inches. Okay, and in the length, it will be near about 16.5 inches. So that is the common standard size. Okay. Now what happens? यह जो हर्बेरियम है, इससे हम लोगों को क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा? जनरली हर्बेरियम में हम लोग क्या करते हैं? प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट करते हैं, उसको ड्राई करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? उस प्लांट कहां से हम लोग कलेक्ट किए हैं, कितना ऑल्टीट्यूड में हम लोग उसको कलेक्ट किए हैं, प्लांट का टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज क्या है, who actually collected this plant specimen, who collected everything, actually we are writing into a particular corner of that herbarium sheet, and after that one we can preserve it for the further information, correct? And that's what happens. The herbarium, sometimes suppose we got some unknown specimen, so that unknown specimen, we don't know about the unknown specimen, and suppose if we don't know about the unknown specimen, so what we can do? Simple thing, if we have some ready-made herbarium, so we can try, or we can try to match with the known just collected specimen with our herbarium sheet. So that's what happens. If we come to the herbarium, so herbarium is actually used as a quick referral system. That's why I told
सपोज सोचो कोई प्लांट और कोई एनिमल्स, और सपोज सोचो तुम कुछ प्लांट स्पेसिमेन कलेक्ट किया है, उसके बारे में तुमको कुछ पता नहीं है, तो क्या कर सकते हो, जो तुम्हारा एरिया में जो जहां पे सोच सकते हो हर्बेरियम रखा गया है, तो वहां पे जा सकते हो, यू कैन आस्क देम फॉर लिटिल हेल्प, and if the plant specimen is already present over there for previous time, just you can match the things. Collected specimen with the herbarium is, if it is a matched, you can get the information regarding that newly collected plant specimen, because तुम्हारा यहाँ पे जो herbarium मिलेगा, इसके यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखा रहता है, कौन कलेक्ट किया है, इसका नाम क्या है, इसका जेनस क्या है, इसका स्पीसीज क्या है. Okay, enter taxonomical category you can get from there. Okay, so then comes to the what are the steps for the making herbarium. तो फर्स्ट क्या करेंगे, डेफिनेटली जाहिर सी बात है, सबसे पहले हम लोग प्लांट को कलेक्ट करेंगे. तो यहाँ पे प्लांट को कलेक्ट करना है, तो क्या करना है, पूरा प्लांट को भी हम लोग उठा के लेके आएंगे, पूरे रूट से लेके. सपोज सोचो तुमको मैंगो प्लांट का हेर्बेरियम बनाना है, तो क्या पूरा मैंगो प्लांट उठा के लाओगे पेपर के ऊपर में, दैट इज नॉट पॉसिबल. सो इन दैट केस व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेक अ शॉर्टर पोर्शंस ऑफ द लीफ और स्टेम, स्मॉल पोर्शन ऑफ द stem portion, okay, or any leaf, that portions we can make the herbarium. And suppose if it is a small grass, so we can make the entire grass as a herbarium sheet. So it's actually, if the plant size is too much high, then we can go for the shorter plant specimen, like we are getting in this picture. This is actually the herbarium of the hibiscus. So here the entire hibiscus plant actually not kept, here some twig portion of the that contains flower, leaves, stems, everything is there. So we have to, before the collections we have to be careful, हम लोग को क्या पोर्शन कलेक्ट करना है. सबसे पहले एक अच्छा सा पोर्शन हम लोग को ढूंढना है जिसके अंदर में इनफ सफिशिएंट लीफ हो, फ्लावर हो, तो जिससे हम लोग को और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकता है. सो द फर्स्ट स्टेप इज द कलेक्शन. नेक्स्ट स्टेप इज द ड्राइंग. ड्राइंग क्या है, तो जब हम लोग प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट करेंगे, उसके अंदर में क्या होगा, जो वेट है, वेट, सो वेट होगा. ओके, सो इस वेट को हम लोग को ड्राई करना है, तो इसके लिए हम लोग पेपर लेंगे, पेपर के अंदर में इस प्लांट स्पेसिमेन को डाल देंगे आराम से. आफ्टर दैट विल टाई इट विद अ रोप, ओके, विद द हेल्प ऑफ द पेपर बोर्ड, एंड विल अलाउ 2 to 3 वीक्स फॉर इट ड्राई. तो ड्राई करेंगे तो कंप्लीट ड्राई हो जाएगा. आफ्टर दैट द थर्ड प्रोसेस इज द पॉइजनिंग. तो यहाँ पे पॉइजनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो प्लांट स्पेसिमेन है इसको हम लोग पेपर के अंदर में फिक्स करेंगे. तो पेपर के अंदर में फिक्स करने के बाद भी हो सकता है इस लीफ के अंदर में फंगस इन्फेक्शन होना शुरू हो जाए. तो यहाँ पे जितना मेहनत करके हम लोग इस हेर्बेरियम को बनाएंगे, तो हो सकता है आफ्टर प्रिजर्वेशन, आफ्टर 1 or 2 months, that entire herbarium eaten by the various kinds of the fungus. So that's why to prevent the fungal growth or bacterial growth, we have to spray the chemicals over the herbarium sheets or herbarium samples. So for chemicals we are using 0.1% mercury chloride as fungicide, and we are using DDT as insecticides. So what is the DDT, you already know, it's a kind of insecticides only, and for fungicides we will use 0.1% mercuric acid. Next is that we'll mount. Fourth process is the mounting. That means the entire specimen we have to keep over the herbarium sheet. With the help of the glue, we'll mount this entire specimen over the page. After that, the fifth stage should be there, the stitching. That means the branch is too much larger. So that's why in some particular different area, as per our requirement, we have to tie with the help of the thread in some portions. Okay, so it's called as stitching. And the leveling. The leveling means in this corner we have to write the information regarding this plant specimen. Okay, what is the taxonomical categories or taxonomical hierarchy. Okay, then the name of the collectors who collected it, and कहां से कलेक्ट किया गया, कितने बजे कलेक्ट किया है, उस एरिया का ऑल्टीट्यूड क्या था, लैटिट्यूड क्या था, इसे हम लोग को जानना है. That information it will be also written in this portion. After that, the last step is the deposition. So after everything, we will preserve this one. Okay, we can preserve in our home also, otherwise particular office organization is there also we can preserve these things. So the common examples यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं. मैक्सिमम यहाँ पे जो है देखो, it's a RBG,
It's a Royal Botanical Garden. It's found in actually England. There we can get about this, near about this much herbarium is actually kept over there. Okay, so next comes to the Central Herbarium, Central National Herbarium, that is actually located in the Kolkata. So they are also near about the more than 2 lakh specimens or herbarium specimens are also preserved over there. So if anyone needs help, you can contact with them also and just take your collected specimen with that particular organizations. So it will be also better for the identification. Okay, this is all about the herbarium. So next comes to the Botanical Garden. So the Botanical Garden, everyone know that one. Okay, the Botanical Garden is actually the plant species in these gardens grown for the identification purposes. Okay, and that is also a large garden will be there. In that area, the varieties of the plants we can grow. So what are the plants? Various kinds of the plants we can grow. But why? Especially over here, we know about that one, the endangered condition. But that means suppose in some geographical region, the on such type of species, some species of that any kind of the plants, they are in the risk of the endangered. So in that conditions, we can took this endangered species from that geographical habitat and we can transfer them into our botanical garden. In the botanical garden, we will give a proper attention. So when they will grow again havocally, or when their endangered period it will be overcome, then we can also return them into the original habitat. So what happens, यहाँ पे हम लोग इसको करेंगे तो इसके जरिए हम लोग को क्या मिलेगा, आइडेंटिफिकेशन भी हो सकता है. So examples क्या है, सिंपल है, National Botanical Garden is located in Lucknow and the Indian Botanical Garden is located in Howrah, West Bengal. Okay, and what are the uses of this botanical garden? Especially suppose in the botanical garden many varieties of the plants will be there. Suppose in your area you got some unknown plants that is not known to you, so you can take these plants to this botanical garden. So botanical garden, the varieties of the botanists are present. With the help of them, easily you can identify which kind of the plant species you have. So it helps us identification. Suppose, and also another helps is there, it's a raw material for the research purposes. In the botanical garden, the various of the plant species are available. So suppose in plant species we have introduced a new character. So what will be the nature of the new characters that we can read? So where it's possible, if we got the various types of the plant specimen, then only it's possible. तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, जो न्यू कैरेक्टर्स है इसके लिए हम लोग को क्या है, ज्यादा से ज्यादा हम लोग को प्लांट्स चाहिए. तो रिसर्च के पर्पस में भी हम लोग बोटेनिकल गार्डन को यूज कर सकते हैं. और पहले ही हम बोले गए थे द कंजर्वेशन ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीसीज. तो एक पर्टिकुलर हैबिटेट में जो प्लांट्स एंडेंजर्ड कंडीशन में है, ओके, दे हैव ए रिस्क ऑफ एक्सटिंक्ट. सो उस पर्टिकुलर एरिया से हम लोग उस प्लांट को ला सकते हैं इनटू आवर बोटेनिकल गार्डन. सो अंडर द गाइडेंस ऑफ द मैन मेड इन्फ्लुएंस they will grow nicely, and once they will grow nicely we can also return them into the natural geographical habitat. So it's all about the botanical garden. So let's move into the museum. So commonly तुम लोग जानते हो सारा तुम लोग के एरिया में म्यूजियम है. तो ये जो हम लोग म्यूजियम देखेंगे तो यहाँ पे म्यूजियम में हम लोग लाइव स्पेसिमेन को हम लोग प्रिजर्व नहीं करते हैं. सो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे जो सारा एनिमल्स और प्लांट्स डेड है और इन द फॉसिल्स फॉर्म, सो हियर वी आर नॉट प्रिजर्विंग एनी काइंड ऑफ लाइव और लिविंग स्पेसिमेन. Here we are not preserving any kind of the living specimen. Either the specimens we can preserve over here in the dead conditions, otherwise we can preserve in the fossils condition, but not in the living conditions. Okay. Now in the museums we can preserve both the plants and animals. Okay. So there are the different techniques are there. So the first techniques, if we come, the jars or containers. So most probably you have seen this picture. कहां से तुम लोग अपना स्कूल का लेबोरेटरी में भी देख सकते हो. तो स्मॉल जार है, उस जार के अंदर में हम लोग एनिमल्स को रखें. तो एनिमल्स क्या है, वो लिविंग है? नो, दे आर ऑल आर डेड ओनली. बट वहां पे देखोगे तो एनिमल्स साल भर विदाउट एनी डिग्रेडेशंस दे रिमेन गुड ओनली, इन गुड कंडीशन. हाउ इट इज पॉसिबल? बिकॉज
इस जार के अंदर में हम लोग क्या दे दी है, प्रिजर्वेटिव. एंड व्हाट आर द प्रिजर्वेटिव? दैट प्रिजर्वेटिव्स आर द नथिंग बट द फॉर्म अल्कोहल एंड द फॉर्मेलिन. तो अल्कोहल और फॉर्मेलिन में कोई भी एनिमल्स को हम लोग प्रिजर्व करके रखेंगे तो वो बहुत दिन तक विदाउट एनी डिग्रेडेशन वहां पे हम लोग रख सकते हैं आराम से. नेक्स्ट इज दैट द इंसेक्ट बॉक्स. Okay, especially if you check over here, if it is an insect box is there, so especially we are using this one for insect only. So in the first case, what will happen? We have to collect the insect, we have to kill the insect. After that, we have to make them dry. After the drying, we have to pin them or we have to fix them within a particular box, and this is called as pinning. And that insect, this is the entire insect box. So this is also a one kind of the tools that can help us in the identification. And the skeleton, if you check the skeleton, it's very common to us. And in your sometimes if you go to visit your local museum, there also you can get that one. Some human skeletons are also there in the large laboratories in the universities. If you go, you can see the human skeletons are also there. Not only the human skeleton, along with the skeletons of the different animals are also present. And through these skeletons also we can get the information regarding that particular animals. Okay, so these are also one kind of the taxonomical aids. And next is the stuffing. So the stuffing is actually we are doing for the large animal. Suppose just look into this picture, even though they are looking like alive but they are actually dead. Okay, so how we are doing over here? So in these large animals, so first we have to take out their all internal organs. Okay, and after that we have to stuff it. Generally for stuffing material we are using straw. Okay, जिसको हम लोग हिंदी में पुआल बोलते हैं, उसको हम लोग उसको स्टफिंग करते हैं. And after that over their body we are spraying the chemicals, and that due to that chemicals, even though that organism is died, but the body shape and the texture of the body, everything, it will be remain as like a living condition. So this is the actually the process of the stuffing. Hope so it's clear. Next comes to the zoological park. तो हम लोग अपना लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम हम लोग जू में गए ही हैं. तो जहां पे हम लोग देखते हैं वैरायटी का एनिमल्स हम लोग को मिलता है, बर्ड्स मिलता है, तो वहां से भी हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. So especially in this zoological park, what are doing? The different animals actually we are keeping. How? Especially not the all animals. So this zoological parks we are actually keeping the all endangered animals. Okay, endangered animals we are actually keeping. So those animals, suppose in their habitat they have a risk of extinction, so from their particular geographical habitat we can take them into our man-made ecosystem, that is a zoological park, and we can give the proper protection care. And due to that one, what will happen? We will try to induce their reproductive frequency, so as a result their number also will increase, and whenever their number will also increase, then we can also release them into their natural habitats. Now the zoological parks, they have the two value also. First of all thing, here we can guide or we can give a proper care to the endangered animal, we can induce their breeding program, and along with it has also tourism purpose. Okay, so from there also this will be an income. So for the aesthetic value also, for the tourism purposes also, for research purposes also, we can use the zoological parks, and they also helps us in the identifications of the various types of the organisms. So let's move into the last part, that is the key. So this key, don't think that one this is a lock and key. It's actually one kind of the tools, and these tools are actually based on similarities and dissimilarities between the organism. Okay, so यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक स्टेटमेंट लेते हैं. अब इस स्टेटमेंट एक ऑर्गेनिज्म में सही हो भी सकता है और एक दूसरा ऑर्गेनिज्म सही नहीं भी हो सकता है. तो स्टेटमेंट जो है, जिस ऑर्गेनिज्म को हम लोग ये एक्सेप्ट सिमिलर हुआ, तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट बोले, इस स्टेटमेंट इस ऑर्गेनिज्म से मैच कर रहा है.
तो that means this statement is accepted for this organism and this statement is rejected for this organism. So actually यहाँ पे क्या है, based on the contrasting character, the generally in the pair of couplet we are using, couplet, two conditions we will use and we can call them as couplet. So especially it represents the choice between the two opposite options. One options we can accept it and one we can reject it, and each statement is actually called as lead. Okay, each statement is actually called as lead. Okay, so यहाँ पे हम लोग इस डिस्कशन, इस एग्जांपल के जरिए हम लोग जानेंगे तो हम लोग को जानने में आसानी होगा. तो यहाँ पे हम लोग क्या है, हम एक कैरेक्टर लिए, दैट कैरेक्टर इज एक्चुअली लिए हैं यहाँ पे हम लोग ड्राई स्किन. तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट हम ड्राई स्किन प्रेजेंट नहीं है, ड्राई स्किन प्रेजेंट है. ओके, तो हम देखें क्या, एक जो ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर में हम लोग देखें एक ड्राई स्किन प्रेजेंट है और एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर में ड्राई स्किन प्रेजेंट नहीं है. तो सपोज सोचो यहाँ पे हम एक सैलामेंडर लिए हैं, तो सैलामेंडर में हम लोग देखें ड्राई स्किन जब कैरेक्टर लिए तो सैलामेंडर के अंदर में ड्राई स्किन नहीं है और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर में ड्राई स्किन हो भी सकता है. तो यहाँ पे क्या किया, ड्राई स्किन एक कैरेक्टर हुआ, एक लीड हुआ. इस लीड में क्या है, हमको दो कैरेक्टर मिला. यहाँ पे हम लोग क्या देखे, एक स्टेटमेंट को, इसको हम लोग एक्सेप्ट किए थे जिसके कारण में ये सैलामेंडर हुआ था. करेक्ट. तो यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे एक कैरेक्टर हम लोग ले सकते हैं जो इससे सब मैच करेगा. और सपोज सोचो ड्राई स्किन प्रेजेंट है. अब आप बोलो ड्राई स्किन प्रेजेंट होगा तो वो ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है, वो ऑर्गेनिज्म हो सकता है रेप्टाइल. तो देखो यहाँ पे ड्राई स्किन प्रेजेंट है, तो ड्राई स्किन प्रेजेंट होगा तो वो क्या हो सकता है, रेप्टाइल. अब यहाँ पे हम रेप्टाइल ले, अब रेप्टाइल के अंदर में भी हम लोग एक कैरेक्टर डाले. क्या कैरेक्टर डाले, तो बॉडी के अंदर में हेयर प्रेजेंट है या नहीं है. तो यहाँ पे जब देखे बॉडी के अंदर में हेयर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या देखे, तो बॉडी के अंदर में हेयर प्रेजेंट है, तो टाइगर में बॉडी के अंदर में हेयर प्रेजेंट है. तो यहाँ पे देखे तो रेप्टाइल के अंदर में बॉडी हेयर प्रेजेंट नहीं है. फिर यहाँ पे क्या देखे, अनदर कैरेक्टर लिए, ऑपोजिबल थम्स. दैट मींस यहाँ पे किसके पास थम्स प्रेजेंट है. तो जनरली हम लोग देखे क्या है, टाइगर के अंदर में थम्स प्रेजेंट नहीं है, बट यहाँ इसके पास क्या है, इसके पास है पॉ. बट यहाँ पे क्या है, किसके पास थम्स प्रेजेंट है. तो यहाँ पे देखे हम लोग इस गौरेली के अंदर में भी हो सकता है, ह्यूमन के अंदर में भी हो सकता है. अब इसलिए हम यहाँ पे बोले, आप यहाँ पे बाइपेडल एक कैरेक्टर लिए, तो दोनों के अंदर में बाइपेडल कौन हो सकता है. तो जो गौरिला है दे आर एक्चुअली डिपेंड ऑन द 4 लेग्स. तो यह तो बाइपेडल नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है. तो यहाँ पे ह्यूमन क्या होगा, बाइपेडल हो सकता है. तो यहाँ पे हम क्या कैरेक्टर लिए, यहाँ पे कैरेक्टर लिए क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है जो बाइपेडल है, जिसके पास अपोजिबल थम्स है, जिसके अंदर में बॉडी हेयर है, जिसके अंदर में ड्राई स्किन भी हो सकता है. तो ये एक कॉमन एग्जांपल है. तो जिसके अंदर में हम किसके बारे में डिस्कशन किए थे, तो ह्यूमन के बारे में हम लोग डिस्कशन किए. तो यहाँ पे क्या होगा, जो बाइपेडल है उसके साथ साथ अपोजिबल थम्स भी है, उसके साथ साथ उसके पास बॉडी हेयर भी है. तो यहाँ पे क्या है, हर एक जगह में हम इस जो बाइपेडल कंडीशन में है इसको हम एक्सेप्ट किए हैं, यहाँ पे एक्सेप्ट किए हैं, यहाँ पे एक्सेप्ट किए हैं. और कुछ जो कैरेक्टर्स है कुछ कुछ जगह में हम उसको रिजेक्ट किए हैं. तो जब हम लोग करेंगे तो यहाँ से हम लोग को एक hints मिलेगा. So we are talking about such organism, such and such organism. Suppose over here, if I talk about that one, the eggs animal is eggs. That animals, it can live in water and as well as it can live in land. And the organisms that can live into water. So that means, अब तुमको हम बोले हैं यहाँ पे एक एनिमल से जो लैंड एंड वाटर दोनों जगह में विदाउट एनी प्रॉब्लम रह सकता है. तो यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स, एक्स ऑर्गेनिजम्स क्या हो सकता है, तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स होगा एम्फीबिया. तो यहाँ पे क्या, कौन सा कैरेक्टर को हम लोग एक्सेप्ट किए, लैंड एंड वाटर, इसको हम लोग रिजेक्ट कर दिए. तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे लीड. सो दैट्स व्हाट हैपेंस. The separate taxonomical keys in each taxonomical category, like family, genus, species, for what? For the identical purposes. And these keys are more analytical in nature. Okay, so these are the all about the taxonomical categories. Hope so you like this video and please subscribe the channel, share it
And if you have any doubt, you can ask me on comment box also, and please like the videos. Till then, thank you and